बच्चा, बहुत भूख लगी है, उसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चलता हूँ उस बकरी के बच्चे को खाने। मम्मी यार कितना दूर तक चलना है? वो पहाड़ तो बहुत ही ज्यादा दूर है। बस थोड़ी दूर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे और हम दोनों खूब हरी हरी घास खाएंगे। बाद में हरी हरी घास खा लेना। पहले तो मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊंगा। बहुत तेज भूख लगी है, 10 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मम्मी ये भेड़िया तो मुझे खाने के लिए कह रहा है। बचा लो मुझे। तू डर मत, मैं हूँ ना। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। तू बचाएगी उसे? मैं हूँ एक भेड़िया। मैं 10 बकरियों को एक साथ मार देता हूँ, समझी? तू यहाँ से चला जा भेड़िया। मेरे बच्चे को कुछ मत कर, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। मम्मी तुम मत लड़ो इस भेड़िए से, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा। भेड़िया भाई तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। तू चल मेरे पीछे। तू मुझे खा ले भेड़िया, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। बड़ा प्यार है तुम दोनों में। अब तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। भाग बाबू। क्या बात है, भागो भागो, लेकिन मुझसे तेज नहीं दौड़ पाओगे तुम दोनों। मम्मी मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूँ। दौड़ता रहो बाबू, नहीं तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। मैं भेड़िए का खाना बन जाती हूँ, कम से कम मम्मी तो बच जाएगी। अरे वाह, कितना प्यार है तुम दोनों में। उसे बचाने के लिए तू रुक गई। चल तुझे ही खा जाता हूँ। ठीक है मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मी को मत खाना। अरे बाबू कहाँ रह गया? बाबू 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 बाबू, कहाँ है तू बाबू? कहीं वो भेड़िया मेरे बाबू को खा तो नहीं गया? बोल बकरी का बच्चा, किधर से खाना चालू करूँ तुझे कि एक ही बार में खा जाऊँ? एक ही बार में खा जाओ। चिंटू बाबू कहाँ चला गया? वो हमें तो कहीं नहीं मिला। इतना हम ढूंढ लिए उसे। जरूर वो पहाड़ पर आम तोड़ने गया होगा। अरे चिंटू वहाँ देखो, एक भेड़िया एक बकरी के बच्चे को घेर लिया है खाने के लिए। तुझे तो मैं बड़े मजे लेकर खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा खाने में तुझे। देखो वो बकरी का बच्चा कितना प्यारा है। चलो हम उसे भेड़िया से बचाते हैं। अरे लेकिन वो एक भेड़िया है, वो हमें भी काट लेगा। भेड़िया बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं हमें उसे बचाना ही चाहिए, लेकिन कैसे बचाएं? सुनो मेरे पास एक उपाय है। मैं पहले एक डंडा लेकर उस भेड़िए के पास जाता हूँ और पीछे से ही उसको एक डंडा मारूंगा, और जैसे ही भेड़िया मुझे काटने के लिए दौड़ाएगा तो मैं बकरी के बच्चे को लेकर भाग जाऊंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है चिंटू। लेकिन तुम भेड़िए से बचोगे कैसे पता नहीं, लेकिन तुम जल्दी पीछे से जाओ, मैं आगे से जाता हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा बकरी का बच्चा। थोड़ा जल्दी से खा जाना, जिससे मुझे दर्द ना हो। तो ये ले। पहले ये ले। अरे कौन मारा बे मुझे इतना तेज? मैंने मारा तुम्हें, फिर से मारूंगा अगर तूने उस बकरी के बच्चे को खाया तो। ओहो इंसान का बच्चा, तुझे तो खाने में और भी मजा आएगा। चबा चबा के खाऊंगा तुझे। पहले पकड़ के तू दिखा, उसके बाद खाना। रुक जा भूतनी के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरा का पूरा खा जाऊंगा तुझे। चिंटी बकरी के बच्चे को लेकर भाग। चल मेरे पास आजा बकरी का बच्चा, मैं तुझे बचाने आई हूँ उस भेड़िए से। नहीं तुम भी मुझे खा जाओगी। अरे आजा, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। ठीक है चल अब मैं तुझे घर लेकर चलती हूँ। रुक जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब कहाँ बच के जाएगा भूतनी के।
image, it was thought that matter is made up of simply indivisible particularly phosphorus thought that matter and could be divided into similar particular to reach a basic until which could not be further subdivided. Demonstrate called that those particular atmosphere divided from the word atoms. Word atoms means indivisible. However, the idea of Greek phosphorus were not based on experimental inventions. It is later 17th century the quantitative systems studies of the complication of pure substances disclose that a few elements, though the components of many different substances, it was also indistinct. Through elements combined to form their components, and how components could be broken down into their consist elements. In 1808, an English school teacher John Dalton recognized that the law of conservation of matter and the law of different proportions could be explained by the existence of atoms. He developed an atomic theories of an postulator of which is that all matter is composed of atoms is different elements which different in their appearance. Atoms is the small particle of an element which can take part in a chemical reaction. For example, he and me, that, etc. have atoms which have independent existence. Whole atoms of hydrogen, nitrogen and oxygen do not exist independently. The modern research has clearly shown that the atoms is further composed of subatomic particles like electrons, substantial particles like hundreds of particles through that exist in atoms. However, electron, proton and neutron are regulated as the value of particle of atom. A Sweden chemical Magnesium 1847 demonstrated atomic resonance elements a number of values that close advanced atomics. It is not possible actually to see the atomic, but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope and clear an X-ray image of an object that are similar than that voltage of visible light cannot be obtained through ordinary optical microscope can measure the size of an object if above 50 nm, and however objects of the size of an atom can be observed in an electron microscope. It used become electrons essence of visible light become through an electrical smallness visibility light figure electron photographs of faces of photographic with has been manufactured about 15 million times. How the bright bond in the figures are layers of carbon atoms in the 20th century.
X-ray work has shown that the diameter of atomic area are the order to multiply 10 in the center of 2 mating hand atoms powers. The molecule is the smaller particle of an pure substance which can exist independently. It may contain one by one atoms. The number of atoms present in a molecule determines its atomicity. Thus, molecule can be monoatomic, diatomic, and triatomic, etc. The carbon, one of those molecular atoms responsible molecular of electron, may contain one, two, or more same types of atoms. For example, C12O P4S8. On the other hand, molecular components exist of different kind of atoms. For example, HCl, NH3, H2SO4, C4H12O6. The size of molecular are definitely bigger than atom. They depend upon two number of atoms present in them or their shape. Some molecular are so big that they are called macromolecular. Homogeneity, such as micromolecular find in blood, it helps to carry oxygen from our lungs to all parts of our body. Each molecule of hemoglobin is made up of nearly 10,000 atoms, and the 68 atoms have then hydrogen atoms. Ions are the space which carry exist positive or negative charges. Wherever almost element loses one or more electric positive icons are found in amount of energy to be proved to a natural atom. This A positive is called a caption. Caption may carry 1 plus 1 plus 2 plus 3 etc. charges. The number of charges present on an icon depends upon the number of electrons lost of the atoms. Anyway, energy is always required to do so. Hence, that formation, if the positive icon is an indicative process, the most common positive icon are formed by the energy is usually required molecular icon. When the atom loser and icon are electron, the form of icon similar a molecular may also lose or gain an electron through an particular X-ray through a gas. The breakdown of molecular icon obtained from the natural products can give important information about their structure, relative atmospheres, until used to express the relative atomic mass is called atomic mass. The mass of this regular inflation of the relative atomic masses of some elements. To give this following tables: relative